morning, everybody. Am I audible to you? Hello. Okay. You are audible, sir. Is there any disturbance? I mean, the voice is clear. Yes, sir. वो पीछे फैन की साउंड आ रही है. From, so let me switch. Now it's fine, sir. Now it's fine? Okay. Yes, sir. सर कमांड लाइन खुला हुआ है स्क्रीन पे. Just.
So what we have done so far, so if you recall all the तो stuff ठीक है, we have तो done. न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे सर। Sorry. सर न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे पिछली क्लास। हाँ हाँ, Bernoulli theorem we have done. यस सर, यस। Bernoulli we have done. Okay. So just tell me once if you recall all the and we had two types of differential equation. One is ODE, ordinary differential equation. One is PDE, partial differential equation. And I have defined linear differential equation. Linear differential equation. I have defined order and degree. Order and degree of a differential equation. Then I defined exact differential equation. Not only defined, I told you how to solve exact differential equation and non-exact differential equation. Non-exact differential. In non-exact differential equation, we have taken variable separable form. So we make it exact by separating variables. Variable separable form. And then homogeneous. So homogeneous is nothing but we are converting this equation into variable separable. So homogeneous equation. And then linear. Sorry, basically I have defined linear here. So but I took one order linear differential equation. So there is one standard form. One order linear differential equation. And then I have taken Bernoulli. Bernoulli differential equation. So basically Bernoulli means we convert this Bernoulli equation into linear differential equation. And we know how to solve this linear differential equation. Similarly, means by a substitution, we substitute y to the, so there is a very standard substitution, which is y to the power minus n equal to p or v, whatever. Similarly, this homogeneous equation, so we have a standard substitution y equals to Vx. So y equals to Vx. So using that substitution, we convert it into variable separable. So these two are fundamental, this and this one. Okay. So these are some basic non-exact differential equation. So let's take more non-exact differential equation and some basic. Yeah. Oh, sorry. So today we will see so how to find integrating factor. Or so you have seen integrate means I have defined integrating factor, and you have seen how to find integrating factor if our equation is linear differential equation. Now if we don't have linear and these type of equation and we are not able to recognize it, it is linear, it is homogeneous, or it is variable, and equation is non-exact. So how to do means how to solve that. So
first we have to make it exact differential equation. To make it exact, we have to multiply by some factor that is said to be integrating factor. Okay, so there are some techniques to find that integrating factor. Okay, so suppose the equation suppose the equation mxy dx plus nxy dy equals to 0 is not exact. This is not exact. And that mu xy is an integrating factor of it. Is an integrating factor of it. Then the equation mu xy dx mxy dy equals to 0 is exact. So this if it is exact, then what is the meaning of this? Excuse me, Yes, yes, yes. sir. Lakshveer Singh is trying to get in, but due to network issue, is not. He's saying just if you could allow at your end. Okay. Thank you, sir. So for that we have to keep on hold for 1 or 2 minutes. Absolutely. So now we have joined. Good morning, sir. Wow. So this is now it is exact. So what is the meaning of this exactness? It is del y and mu of xy mxy, and this is del x mu of xy. I'm sorry, I have written this one twice, but it is n. It is n of xy. Okay. So why I'm calling this? So this is the definition. If you see, means now this term has become mxy, and this term has become nxy. So this equation is exact if and only if, basically, if and only if del y of this term equals to del x of this term. You understood it or not? Last time हमने ये theorem prove भी किया था ना? Yes, sir. You have understood, or you want me to write one more step? Actually, I am missing one step.
No, sir, it's fine. ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके, आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि अब हम एग्जैक्ट ले रहे हैं तो ये हमारा कैपिटल एम एक्स वाई की तरह हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं और इसको कैपिटल एन एक्स वाई की तरह। एंड देन इफ इट इज एग्जैक्ट देन डेल डेल वाई ऑफ दिस इक्वल्स टू डेल डेल एक्स ऑफ दिस। ओके, so then this condition, so what I will apply, I will take this del del y inside. Okay, so apply the product formula, basically product formula of derivative. So in that case it will become okay, let me start with this first. So it is nxy del del x mu of xy minus mxy del del x. Awesome. Let me go manually, otherwise you will get confused. I don't want to miss steps. So let's start with this one and apply the product formula. So it is mu xy del del y mxy plus mxy del del y mu xy equals to del nxy del del x mu xy plus mu xy and del del x and xy. Okay, now I can write, means I can take this basically del mu upon del y, and means I would like to take these terms, mu terms on one side and this m and n terms one side. So if I take it, then it will become nxy, this term, del on del x mu xy. So better if I write it just mu. There is no harm in writing. So I can save some space. So del mu upon del x, this term writing. Okay, I'm not writing xy again and again. And minus, so there is this one. So I will take it on this other side. So it is mxy del mu upon del y equals to, now I will take this mu this side and take this mu xy common, and it is del del y mxy minus del del x and xy. Understood? If you have any doubt, please ask me. Understood or not? So Understood. so let's move on to next slide. So let me just copy and paste what I have written in last page. So n of xy del mu upon del x minus m of xy del mu upon del y, and this is del m xy upon del y minus del n
upon del x mu of xy. So basically I want to find out this mu, okay, this term mu. So no need to write xy again and again. Even you can erase xy from this, okay, it would be better. It is understood that this is function of xy. Okay, so if you recall this equation, the linear equation dy by dx plus py equals to q. If you recall this equation and if you see the integrating factor, so this equation, our integrating factor, and I have proved it. This is integrating factor e to the power px dx. So basically I want to find out this mu now. Yeah. So so if you see means what we have done. So we have multiplied this equation mu of xy mxy dx plus mu of xy and xy dy equals to 0. So there are two cases. My integrate, if our integrating factor is this e to the power integration px dx. So basically it depends on x and y. Okay, so for example, we take this mu xy in this type of form. So in that case, suppose mu xy is function of x. If it is function of x, just function of x, so we can write it like this: mu x mxy dx plus mu x and xy dy equals 0. If it is just function of x. Yes. So if it is function of x, then this term will vanish, because in that case del mu upon del y will become 0. So in this case del mu upon del y will become 0. If it becomes 0, then this equation will be converted into nxy del mu upon del x equals to del mxy on del y minus del nxy upon del x to mu. Okay, so carefully here, we have now this mu is just function of x, not xy. Okay, so if you see it looks like a variable separable form. So can I move on to next slide? Wait, sir, wait. So let me take some space here. And so if you see, this is variable separable form in mu and x. So what will you do then? D mu upon mu, you can write like this, equals to this term del m upon del y. So this m is function of xy. I'm just writing del m upon del y minus del n upon del x and divided by nxy. Okay, and dx. Sorry. So I have taken del mu upon mu here.
So in this here in this side we have x del x also there. So basically it is function of x, so we can take it just dx. Can I move now? Can I move on to next slide? Yes, sir. So just let me write it once again. Del mu upon del x equals to 1 upon nxy del m xy on del y minus del n xy upon del x dx. So if this is function of Sir, it should y. be del nu upon nu, not del nu upon del x. Oh yeah, sorry, it's del mu upon mu. Okay, so it del mu upon mu. So this is just del mu upon mu equals to 1 upon nxy del m xy upon del y minus del n xy upon del x dx. So if you see here, we are assuming mu is function of x. Mu is function of x. So if this quantity is function of y, then there is again a problem. On right hand side we have function of y. On left hand side we have function of x. Okay. But if it is function of x, then everything fine. So let me just write on this one. If 1 upon x and xy del mxy upon del y minus del nxy upon del x. If this means involves the variable y, involves the variable y, this equation then involves this equation then involves two dependent variables, two dependent variables, and we again have difficulties. Why? Because left hand side we have function of x and right hand side we have function of y. So again this is so. However, if this is del m upon del y minus del n x y upon del x is function of x. If it is function of x, okay, so then everything fine. We can solve this equation now. So it is del mu upon mu, or you can write it d mu, because this mu is just function of x. So this is d mu x upon mu x equals to this is 1 upon nxy. So here we have image function of xy del m upon xy upon del y minus del n xy
upon del x dx. I'm writing dx now. Why? Because I'm considering this as a function of x. So now integrate both sides. Can I move on to next slide? Can I move on to next slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this d mu upon dx will become ln of mu. So ln of mu x, and this is ln of mu x is integration on an xy del m xy upon del y minus del n xy upon del x dx, and mu x is finally, this is what we wanted to evaluate, integrating factor. This is e to the power 1 upon n xy del m xy on del y minus del n xy upon del x dx. This is mu x. Similarly, you may assume this mu is function of y, and just then in that case just take it is mu y. So in that case del m upon del x will become 0. Okay, so this term will change and it will be mxy then. Okay, so let me just write the results. Can I move on to next slide? Yeah. Can I move on to next slide? Yes, sir. Yes, sir. So let me just try. So consider the differential equation mxy dx plus nxy dy equals to 0 if 1 upon nxy del mxy on del y minus del nxy upon del x. If this is depend on, or this is function of x, depend upon x only, then our integrating factor is exponential, and let me just take this is mu. Let me write this is mu. So if this mu depends upon this term, it depends upon x only, then e to the power mu dx. So integration mu dx is an integrating factor, is an integrating factor of equation 1. So similarly, if this mu
equals to 1 upon mxy del m. So this time I will take del m xy upon del x minus del mxy upon del y. If this depends upon y only, then e to the power mu dy. This time I will take dy. So mu dy is an integrating factor, is an integrating factor of equation. Is an integrating factor. I think I will take one example. I want to next slide. Yes, sir. So consider the differential equation. Consider the differential equation 2x square plus y dx plus x square y minus x dy equals to 0. Okay. So here mxy is 2x square plus y and nxy is x square y minus x. So del m upon del y is how much? 1. And del n upon del x is 2xy minus 1. So now just see means what is this del n upon del x minus del m upon del y. So or yeah, so just see what is. So basically they are not equal. Del m upon, so first del m upon del y is not equals to del n upon del x. This implies differential equation is not exact. Okay, so equation is not exact. So now we are looking for integrating factor to make it exact. Okay. So to find out integrating factor, just do this thing: del m upon del y minus del n upon del x. So del m upon del y minus del n upon del x is how much? 1 minus 2xy minus 1. This is equals to twice minus minus plus 2 minus 2xy. And this is equals to twice. You can take 2 outside. It is minus x. So twice 1 minus x. If you see this term, so if you take x common, then it is xy minus 1. If you divide it by this nxy, then it is xy minus 1. If you divide it by this nxy, then it is xy minus 1. If you divide it by this nxy, then it is xy minus 1. If you divide it by this nxy, then it is xy minus 1. If you divide it by this nxy, then it is xy minus 1. If you divide it by this nxy, then it is xy minus 1. If you divide it by this nxy, then it is xy minus 1. If you divide it by this nxy, then it is xy minus 1. If you divide it by this nxy, then it is xy minus 1. If you divide it by this nxy, then it is xy minus 1. If you divide it by this nxy, then it is xy minus 1. If you divide it by this nxy, then it is xy minus 1. If you divide it by this nxy, then it is xy minus 1. If you divide it by this nxy, then it is xy minus 1. If you divide it by this nxy, then it is xy minus 1. If you divide it by this nxy, then it is xy minus 1. If you divide it by this nxy, then it is xy minus 1. If you divide it by this nx
So that means you are dividing it by xy minus 1, x into xy minus 1, x into xy minus 1. So if you take minus common, then it will become minus of 2x, minus of 2 upon x. Yes, if it is minus of 2x, then that means what? It is function of x. And if it is function of x, then our integrating factor would be, e to the power minus 2 upon x dx. This one would be our integrating. If it is function of y, then there is a problem. So in that case, we have to try this one, other one, del n upon del x minus del m upon del y, and divided by m. Okay. So basically, means there is a technique. If you evaluate this, just do some mental calculation and try to divide it by n and m. So you see, means which is is this nxy is working and nmxy is working. And if nxy is working, then just divide by this one and you will get it. If you divide it by mxy, so you will get some function of y. So in that case, just take del n upon del x minus del m upon del y. If you have any doubt, then please ask me. So if you have this one, then after evaluating, it will become 1 upon x square. So if you multiply by this 1 upon x square, your equation will become exact. Okay. And then solve it. You know how to solve the difference equations. If you have any doubt, please ask me. Ask me now. No? Can I move on to next slide? Can I move on to next slide? Sir, Anuj is asking to wait. Huh? So can you move to the previous slide? Okay, you ask what do you want? Because someone wrote in the comment section to wait. Someone? Someone wrote in the comment section to wait. Oh. Okay, I will just stop this. Just few 1 or 2 minutes, then you can see. There. Consider the equation. Do you have class after this? Yes, sir. Class भी है. Yes, sir. Test भी आज. Just wait. Let me finish. A1x plus b1y plus e1 dx plus a2x plus b2y plus c2 c2 d1 equals to 0. So it's a special type of equation. If you see, this is one linear in x and y. This is again means this some linear term in x and y. Okay. So to solve these type of equation, what we do, we have to eliminate these constants c1 and c2. Once we eliminate, means we could eliminate this c1 and c2. So what is the benefit of eliminating c1 and c2? Then this equation will convert into homogeneous. You can
write it into derivative form and then just draw. So to eliminate this, what you do, you just replace, so use this transformation. So put x equals to capital X plus h and y equals to capital Y plus k. So the whole system will convert into this form. This is a1 x plus h plus b1 y plus k plus c1 dx plus a2 x plus h plus b2 y plus k plus c2 dy equals to 0. So this we can write a1x plus b1y plus a1h plus b1k plus c1 dx plus a2x plus b2y plus a2h plus b2k plus c2 dy equals to 0. So we will assume these x and y such that our means this x basically we will assume in the form of this x, capital X and h. So I will consider my h and k such that this term equals to 0, both the terms. So solve these two, a1h plus b1k plus c1 equals to 0 and a2h plus b2k plus c2 equals to 0. So सर वो after माइनस नहीं solving होगा, which one? कौन सा इन दोनों के बीच में माइनस नहीं होगा साइन जब ये इक्वल टू के इधर आया तो? सर नहीं नहीं, किसके बीच में माइनस होगा? जैसे मैंने तो x की जगह ये इसको रिप्लेस कर दिया, स्मॉल y की जगह ये रिप्लेस किया, माइनस कहाँ होगा? कहाँ होगा माइनस? माइनस तो नहीं होगा, बताओ मुझे कहाँ होगा माइनस? अरे मैं कह रहा हूँ कि जो आपने पूरी की पूरी dy वाली टर्म है वो तो RHS से LHS पर लाए ना। नहीं, सब कुछ तो LHS में है, dy यहाँ पर भी LHS में है, यहाँ अच्छा भी ठीक है LHS में हाँ वो दिखाने दो होगा होगा। सबको ठीक है, दिखा दीजिए। हाँ। सो यहाँ से हम h और k निकाल, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के जैसे लीनियर इक्वेशन सोल्व करते हैं, देन वी विल फाइंड आउट h एंड k। सो वही h एंड k यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे, फिर इसको x को हमें इस तरह से मतलब इस तरह से लेना है कि this term will become 0, this and this term, h and k will take such that this term and this term will become 0. Okay. So then what will happen is a1x plus b1y dx, and I'm sorry, this is now capital dx, this is also capital dx and capital dy, because I have replaced this x by x plus h, and this h and k, they are constant basically. So dx is dx and dy is dy. So the whole system will convert into this form, a2x plus b2y dy equals to 0. And you know how to solve this type of differential equation. Okay, you can do one thing, means one technique is just write it into this form, dy by dx equals to minus a1x plus b1y divided by a2x plus b2y, and then solve it. So now you can see this is homogeneous form. Yes, this form is homogeneous.
you can divide by x. Okay, so you do the substitution vx or capital Y equals to vx, and then solve it. It will convert it into variable separable form, and again replace the value of this v by y by x, and replace these capital X and capital Y by this capital X is x minus h and capital Y is small y minus k. Okay. Understood? We move on to next slide. Yes. Actually, I'm not able to read your chat. I mean, can I move on to next slide? So let's try this example. We have this example x minus 2y plus 1 dx plus 4x minus 3y minus 6 dy equals to 0. So in this example, we just put x equals to x plus h and put y equals to y plus k. Okay. This is dx, dy is dy. So what will you get? X plus h minus 2y minus 2k plus 1 dx plus 4x, x plus h minus 3 y plus k minus 6 dy equals to 0. So this will become x minus 2y dy x plus 4x minus 3y dy equals to 0. And put this h minus 2k plus 1 equals to 0 and 4h minus 3k minus 6 equal to h. So if you solve these two, means h and k, so you will get h equals to 3 and I think k equals to 2. So basically your substitution is x equals to x plus 3 and y equals to y plus 2. Now your equation is converted into this form: x minus 2y dx plus 4x minus 3y dy equals 0. So dy upon dx would be minus x minus 2y on 4x minus 3y, and it would be 1 minus 2y upon x divided by 4 minus 3y upon x. And then just do it y equals to vx, and so you can solve it. Yes, any question? Yeah, now. So you please tell me which slide you want to see. कौन सी स्लाइड देखनी है आपको? Sir, sixth. Sixth.
Done, sir. Done. और कुछ चैट सर स्क्रीन मेरे लिए ही पेज हुई है या सबके लिए स्क्रीन अच्छा कुछ टाइम के लिए चैट थोड़ा तो वेट सर आई थिंक आपने वेट बोला होगा उसको तो मैं स्लाइड चेंज करना चाह रहा हूँ एक्चुअली मैं आपकी वेट बस स्टार्टिंग में देखता हूँ और लास्ट में तो बीच में आप बोल दिया करो चैट में लिखने से कोई फायदा Okay, sir. नहीं ठीक है एनीथिंग एल्स ओके Shall we leave? yeah. Okay, sir. Thank you, sir. लिखो चलो
डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोसेसेस present in memory at any point of time or degree of multiprogram. देखो प्रोसेस को अगर कैटेगराइज करना हो तो दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो प्रोसेस जो सीपीयू बाउंड होते हैं, एक वो प्रोसेस जो इनपुट आउटपुट बाउंड होते हैं। फर्स्ट सीपीयू बाउंड प्रोसेस, सेकंड इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। सीपीयू बाउंड प्रोसेस में देखो वो सीपीयू बाउंड प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं? The processes which required a CPU time are called CPU bound process। कौन से स्टेट में होंगे प्रोसेस? एग्जीक्यूटिंग इसमें एग्जीक्यूट जो सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस है वो उसमें होंगे अभी एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस में होंगे। एक प्रोग्राम उससे पहले मतलब हो रहा होगा एग्जीक्यूट, मेन मेमोरी में होंगे। प्रोसेस स्टेट डायग्राम की पढ़ा नहीं है किसी ने? एग्जीक्यूटिंग में तो होंगे पर कौन सी स्टेट में होंगे? रेडी तो रेडी स्टेट में होंगे क्या? रनिंग स्टेट में होंगे। दूसरा लिखो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। The processes which more amount of input output time are called input output process। ये कौन से स्टेट में होंगे?
ये सर रनिंग में होने चाहिए, ये भी रनिंग होनी चाहिए। ये रनिंग में होने चाहिए, पहले वाले रेडी, पहले वाले तो नहीं, ये रेडी स्टेट में होने चाहिए, सॉरी ये रेडी स्टेट में होने चाहिए। कॉपी तो लोग के पास है, एक बार पेज पलट लोगे ना तो दिख जाएगा, सामने लिखा हुआ उसमें। इतना लिख लिया? हम्म। यस सर। देखो, जब भी प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो वो करता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। क्या होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? saving the context of one process and loading the context of another process is called as context switching. एक ये प्रोसेस है P1, एक ये प्रोसेस, ठीक है। सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस, जो भी प्रोसेस में काम हो रहा होगा उनके कॉन्टेक्स्ट को सेव करना, जो भी उसमें रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से, ये हो गई आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और दूसरा क्या होगा? लोडिंग। नोट करके लिख लो, कभी कभी सम स्पेशल केसेस एक ही प्रोसेस में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है आपके, आगे पढ़ोगे आप, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग विद वन प्रोसेस। इसमें समझ में आएगा आपको कि एक ही प्रोसेस में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे होती है।
then context switching. Increase undesirable. तो जो भी आप पढ़ रहे थे ना, रेडी न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जा रहा था, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जा रहा था, रनिंग से वेट और ब्लॉक स्टेट में जा रहा था, ये सब काम करते हैं आपके शेड्यूलर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मिड टर्म शेड्यूलर। लिख लो, इन द ऑपरेटिंग सिस्टम देयर आर 3 डिफरेंट शेड्यूलर। शेड्यूलर भी प्रोसेस से होते हैं, ठीक है। पहला है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर LTS, और इसको जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं। ये क्या काम करने का काम होता है, जब आपका न्यू प्रोसेस क्रिएट होता है तो इसको सिस्टम में लाने के लिए, मतलब रेडी स्टेट में लाने के लिए काम आता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज responsible of creating and bringing the new processes into the system। शेड्यूलर का ये काम होता है बस। दूसरा आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, STS, और इसको बोलते हैं CPU शेड्यूलर। इसका क्या नाम होता है, STS is responsible for selecting the one process in the ready state for scheduling on the CPU, मतलब running state। तीसरा
तीसरा आपका क्या होता है, मिड टर्म शेड्यूलर। और मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये आपका आता है सस्पेंड और रिज्यूम प्रोसेस करने में। मिड टर्म शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग और resuming the process. लिख लिया है आपने? देखो डायग्राम बनाया था ना, प्रोसेस स्टेट डायग्राम। क्या बनाया था? न्यू स्टेट, फिर रेडी स्टेट, फिर रनिंग स्टेट, उसके बाद टर्मिनेट, प्रायोरिटी। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आपका यहाँ पे होता है, अगर प्रोसेस क्रिएशन होता है और प्रोसेस को मेन मेमोरी में लाने के लिए। दूसरा क्या होता है ना, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका रेडी स्टेट में होता है, प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए रनिंग स्टेट में। तीसरा शेड्यूल क्या होता है, मिड टर्म शेड्यूलर। मिड टर्म शेड्यूलर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग और रिज्यूमिंग द प्रोसेस। तो प्रोसेस सस्पेंड और रिज्यूम कहाँ होते हैं, ब्लॉक और वेट स्टेट में। उसके बाद एक और होता है सस्पेंड ब्लॉक। तो यहाँ पे होता है आपका मिड टर्म शेड्यूलर। जो मिड टर्म शेड्यूलर काम करता है उसको बोलते हैं स्वैपिंग। तो ये काम करता है मिड टर्म शेड्यूलर, उसको बोलते हैं स्वैपिंग। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द जॉब डन बाय मिड टर्म शेड्यूलर is called as swapping। अब देखो प्रोसेस में क्या क्या टाइम होते हैं, इसके बाद फिर अपने आएंगे न्यूमेरिकल। टाइम के बेस पे हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो भी आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती हैं। The process will have various different times। क्या का टाइम होता है, अराइवल टाइम, अराइवल टाइम का होता है द टाइम when the process is arrived into ready state is called as arrival time। जब प्रोसेस रेडी स्टेट में आता है तो वो अराइवल टाइम ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस। दूसरा क्या होता है, कंप्लीशन टाइम।
completion time क्या होता है? The time when the process is completed its total execution. Total execution मतलब CPU time भी complete कर लेता है और IO bar time भी complete कर लेता है. इसको बोलते हैं completion time. The time when the process is completed its total execution. टोटल एग्जीक्यूशन मतलब सीपीयू बाउंड टाइम भी कंप्लीट कर लेगा और आईओ बाउंड टाइम भी कंप्लीट कर लेगा. कॉल्ड एज कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेस. उसके बाद है आपका फर्स्ट टाइम. क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड by the process for its execution. जितना अगर एक प्रोसेस को रिक्वायर करने में जरूरत है 4 नैनोसेकंड, तो 4 नैनोसेकंड जो टाइम होता है वो आपको होता है फर्स्ट टाइम. टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन is called as first time of the process. उसके बाद आपका आता है टर्न अराउंड टाइम. अराइवल टाइम और कंप्लीशन टाइम के बीच का डिफरेंस होता है आपका टर्न अराउंड टाइम. टाइम difference between completion time and arrival time is called as turnaround time. Turnaround time का अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं completion time minus arrival time. ये सब आपके न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे ना उसमें काम आएगा सारे. वेटिंग टाइम जब प्रोसेस क्यू में होता है और जो वेट कर रहा होता है उसे कहते हैं वेटिंग टाइम. टाइम डिफरेंस बिटवीन turnaround time and burst time called as waiting time of the process. अगर वेटिंग टाइम का फॉर्मूला लिखो तो बन जाएगा टर्नअराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. इसके बाद आखिरी आपका रिस्पॉन्स टाइम. The time difference between first response and arrival time is called as
CPU शेड्यूलिंग। CPU शेड्यूलिंग कहाँ होती है? शेड्यूलिंग होती है आपके रेडी स्टेट में। कौन सा शेड्यूलर रिस्पॉन्सिबल होता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। गोल क्या होता है CPU शेड्यूलिंग का? गोल होता है टू मैक्सिमाइज the CPU utilization and throughput of the system. CPU utilization और throughput of the system को मैक्सिमाइज करना और वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम को कम करना। एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इनको मिनिमाइज करना। देख लिया था ना? देखो आप पहली शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अपनी है FCFS। अब ध्यान से देखना, जितना थ्योरी दिखा है ना अब इसमें सब समझ में आएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये होती है आपका नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव क्या बताया था मैंने? एक साथ पूरा जितना भी उसका प्रोसेस का टाइम है उतना एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक? अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हो गया प्रोसेस नंबर आपका, ये हो गया अराइवल टाइम, ये हो गया वर्स्ट टाइम। प्रोसेस नंबर 1 2 3 4 5 प्रोसेस हो गए। अराइवल टाइम हो गया 0 1 2 3 4। फर्स्ट टाइम हो गया मतलब कितने टाइम प्रोसेस रन कर रहा है? ये कर रहा है 2 नैनो सेकंड, ये कर रहा है 3 नैनो सेकंड, ये कर रहा है 5 नैनो सेकंड, ये कर रहा है 4 और ये कर रहा है 6। अब इस ये दे दिया आपका क्वेश्चन कि इसको आपको FCFS की हेल्प से सॉल्व करना है और फाइंड करना है कि क्या इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम होगा और क्या इसका एवरेज वेटिंग टाइम होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए एक हम बनाते हैं गैंट चार्ट। गैंट चार्ट क्या होता है? जो प्रोसेस आ रहा होता है उसका कंप्लीशन टाइम करने के लिए, जैसे अब कंप्लीशन टाइम सबसे पहले क्या 0 अराइवल, जब प्रोसेस बिल्कुल कोई स्टार्ट नहीं हुआ था, जो 0 अराइवल टाइम में कौन सा प्रोसेस आया? 1 प्रोसेस। ठीक है, तो P1 इसको यहाँ पे ऐसे नाम दो, P1 P2 P3 P4 P5। जब एकदम प्रोसेस 0 स्टेट पे था, मतलब आपका टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ, तब कौन सा प्रोसेस आ गया तुरंत रेडी स्टेट में? P1। तो 0 पे P1 हुआ, उसका बस टाइम क्या है? 2 नैनो सेकंड, तो 2 नैनो सेकंड तक रन करेगा।
मतलब 2 नैनो सेकंड। उसके बाद 2 नैनो सेकंड पे कौन कौन से अराइवल हो गए, एक तो P1 हो गया और एक क्या हो गया, P3 हो गया। और हम कौन सी एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, FCFS। तो FCFS के अकॉर्डिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग कौन सा पहले आया होगा, P2। तो सबसे पहले कौन सा शेड्यूल होगा, P2। P2 का बस टाइम कितना है, 3 नैनो सेकंड। तो 3 नैनो सेकंड तक रन होगा और इसमें ऐड हो जाएगा, तो हो गया 5। उसके बाद अब आपके सारे प्रोसेस, आप देखो 5 नैनो सेकंड में सारे प्रोसेस उसी के अंडर है, सारे प्रोसेस आपके क्यू में आ चुके होंगे। लेकिन क्योंकि हम FCFS यूज कर रहे हैं तो इसके बाद कौन सा प्रोसेस रन करेंगे, P3। P3 इसका बस टाइम कितना है, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद P4 इसका बस टाइम कितना है, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 14। उसके बाद P5 इसका बस टाइम कितना है, 6, तो ये कितना हो जाएगा, 20। समझ में आया कि ना, हेलो, यस सर। यस सबको सर। आ गया इतना समझ में। आगे सर आगे। नो सर, एक बार प्लीज दोबारा समझा दीजिए। दोबारा समझा दूं, यस सर। आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जितना है कि ये प्रोसेस नंबर है P1 P2 P3 P4 P5। 0 नैनो सेकंड पे P1 प्रोसेस आ रहा है, शेड्यूल हो रहा है। 1 नैनो सेकंड में P2 आ रहा है, 2 नैनो सेकंड पे P3 आ रहा है, 3 नैनो सेकंड P4 आ रहा है और 4 नैनो सेकंड में P5 आ रहा है। बस क्या है आपका, आप अपने डेफिनेशन से पढ़ो कि कितने टाइम कौन सा प्रोसेस टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट करने में, टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। तो P1 को लग रहा है 2 नैनो सेकंड, P2 को लग रहा है 3, P4 को लग रहा है 5, P4 को लग रहा है 4 और P5 को लग रहा है 6। अब क्या हमने एक, इसको बोलते हैं गैंट चार्ट। गैंट चार्ट का मतलब होता है कि कैसे कैसे प्रोसेस शेड्यूल होते हैं और कैसे कैसे वो कंप्लीट होते हैं, वो हम दिखाते हैं चार्ट के थ्रू। तो सबसे पहले क्या आया, जीरो अराइवल टाइम पे प्रोसेस P1 कितना टाइम रन किया, 2 नैनो सेकंड। जीरो पे टाइम पे आया P1 कितना टाइम रन किया, 2। अब आप 2 नैनो सेकंड पे देखो कि कौन कौन से और प्रोसेस आ गए हैं। एक तो P2 आ गया और P3 आ गया, जो अराइवल टाइम उसका 1 है और 2 है, और ये तो रन हो ही गया, ठीक। तो P2 और P3, और क्योंकि हम FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया, P2। तो इसलिए हमने P2 को एग्जीक्यूट किया। P2 का बस टाइम कितना है, 3 नैनो सेकंड। हेलो, हेलो। हाँ आवाज आ रही है। हाँ सर, अब आ रही है। 2 नैनो सेकंड पे आपका कौन कौन सा प्रोसेस आ गया, P2 और P3, P2 और P3। ठीक है। और हम एल्गोरिथम कौन सी यूज कर रहे हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, FCFS, फर्स्ट कम। FCFS। तो सबसे पहले क्या ओके। होगा, P2, और P2 का बस टाइम कितना, 3 नैनो सेकंड, 3 नैनो सेकंड। तो हम्म। आफ्टर 2 ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल 5। अब 5 नैनो सेकंड पे आप देखो कि आपके कौन कौन से प्रोसेस आ गए हैं इस टाइम क्यू पे। P3 आ गया है, P4 आ चुका है, P4, क्योंकि अराइवल टाइम इनका क्या है, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4। कौन सा शेड्यूल्ड होगा, वो है इसके अकॉर्डिंग जो आपका शेड्यूल है। तो सबसे पहले क्या शेड्यूल होगा, P3, फिर उसके P3, और फिर P5। तो P3 शेड्यूल्ड हुआ कितने टाइम, 5 टाइम, 5। 5 नैनो सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो 5 से 5 10। फिर होगा P4 शेड्यूल, P4 के लिए क्या बस टाइम, तो क्या रन किया, 4 4। के लिए, तो होगा 40। फिर होगा P5, P5 आपका कितना है, 6 वॉच टाइम है, तो ये 6 टाइम के लिए रन किया तो होगा 20, ठीक है। ओके सर। कंप्लीशन टाइम लिखो इन सारे प्रोसेस का, P1 P2 P3 P4,
P5। तो कंप्लीशन टाइम इनका होगा P1 का होगा 2 नैनो सेकेंड, क्योंकि 2 नैनो सेकेंड पे कंप्लीट हुआ प्रोसेस। P2 का होगा कंप्लीशन टाइम 5 नैनो सेकेंड, क्योंकि 5 नैनो सेकेंड